So look here. Proton was discovered by Goldstein. What? Proton discovered by Goldstein by performing same experiment as similar as J.J. Thomson, by performing same experiment of J.J. Thomson. Okay, that is, he called cathode ray and he called anode ray experiment. What? Anode ray experiment. And the experiment was just similar, just he changed the electrodes. Anode ray experiment. Clear? So now look here, once again I am going to draw the anode ray experiment. That is very easy to all of you. Look at that. This is a what? Cathode ray or discharge tube. Okay. That is connected to the source of battery. Okay. It means now in this experiment, he take perforated cathode tube. What? He take perforated cathode ray. He take perforated cathode. Look here. This is perforated. Perforated means it means having small holes, and then he take another electrode, that is what? Anode. Okay, look here, anode. And in this experiment, just similar to as J.J. Thomson, having vacuum tube. What? Vacuum tube. Okay, and same as he applied pressure. How much? He applied pressure 10 to the power minus 3 mm of Hg. How much pressure? 10 to the power minus 3 mm of Hg. And pressure and voltage is approx 10,000 volt. It is clear? Say yes or no? Yes, sir. Yes, Okay. sir. And here you can see that Yes, sir. in J.J. Thomson experiment, Yes, where sir. the anode having zinc sulfide screen, but in Goldstein experiment, the cathode having zinc sulfide screen. Clear? Zinc sulfide screen. Okay. When he applied the pressure and voltage, then few rays that emerges from the anode, and strike over zinc sulfide screen that placed behind the cathode. It means when the rays that emerges from anode, that pass through perforated cathode and causes scintillation of the zinc sulfide screen.
Yes or no? Then he observed some points that anode rays travel in a straight line. What? One. Anode rays travel in straight line. Okay, sure. And one more thing, he take a gas in discharge tube, that is what? Hydrogen gas. What? Hydrogen gas. Okay, clear? So these gases are get ionized. These gases get ionized and change into charged particle. And these charged particle that travel through the perforated cathode and causes scintillation or zinc sulfide screen. Confirm? So he observed that anode rays travel in a straight line and ionize the gases. Ionize the gas. And which gas? Hydrogen gas. Clear? Sure? Next, the E by M ratio. The E by M ratio is very high. Okay, E by M ratio means charge on electron. It means charge upon mass. Okay, so that is very high. We discuss later. Okay. So once again, what is the point? Anode rays travel in a straight line. It means ionize the gas, and the E by M ratio is very high. Clear? So having mechanical energy, having mechanical energy. Mechanical energy. Mechanical energy, it means if we place here, suppose if we place a thin metallic sheet between the pathway of the rays, this will vibrate. The vibration of this metallic sheet prove that the rays having mechanical energy. Yes or no? Okay. It is clear to all of you? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Yes, sir. Now next one. Yes, sir. So this experiment is, it means very easy to all of you, that is taking a discharge tube, creating a high voltage and low pressure, and taking a electrode that connected to terminal battery. Okay. In J.J. Thomson, the cathode ray tube used as an emergence of the rays. In Goldstein experiment, the anode rays used for emergence of the rays. Clear? And approx the point will be similar. Okay, but little bit difference. In J.J. Thomson, the E by M ratio is low, and here E by M ratio is very high. Clear? Sure? And these rays are made up of these rays are made up of positive charge. Okay, these positive charge later on called electrons. Okay, you know that here the hydrogen gas is used. Ionized means hydrogen having only one electron. If we ionize the hydrogen, it means take out the electron. Suppose hydrogen having one electron, and if we remove the electron, hydrogen act as a what? Positive charge. So this positive charge just behave as a proton. Clear? Say yes or no? Hello, boys and girls. Yes, sir. Yes, sir. Do you have a headache? Yes, sir. You feel headache? Huh? Yes, boys and girls.
Do you feel headache? No, sir. No. No, Okay. sir. No, sir. Okay. No, sir. Okay. So look here. It means, so there are three electron, proton discovered. Look here. So proton discovered by Goldstein. Electron discovered by discovered by J.J. Thomson. So in the 18th till 18th century, people believe that atom having two particles only. Atom having two particles. So it means atom consists of proton and neutron. But this concept is very what? Very people thought that they have a very confusion if they have positive and negative charges. You know that if any atom, any substance having positive and negative charges, they attract to each other. They attract to each other. So how it is able to? How it is stable? It means it is not possible to stay together. That is not possible to stay together. Okay. So scientists believe that there's another kind of particle. There's another kind of particle that present that make the atom neutral. That make the atom neutral, but they don't have any evidence. So it takes too much time to discover. Okay. Neutron discovered in 19th century. It means 1932. Neutron discovered 1932, and these proton electron discovered in 18th century. 18th century. But neutron discovered in 1932. 19th century. Okay. And do you know that is a very interesting fact about the neutron. This discovery having a great historical fact. Do you know about the James Chadwick? James Chadwick. Neutron was discovered by James Chadwick. Neutron discovered by James Chadwick under the prisoners. Under his prisoners. It means वो कैदी थे. And telling a history fact कि जब जेम्स चैडविक कुछ इट मीन्स कुछ छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट किया करते थे. हाँ, तो एक्चुअली उस वक्त हुआ क्या, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुई थी, तो इनको 4 साल की जेल हो गई. 4 year prisoners he got, but he performed the experiment. उन्होंने क्या किया, वहाँ के कुछ जो लिटरेट पीपल थे, साइंटिस्ट थे जर्मनी में, उनको उन्होंने इकट्ठा किया और वहाँ के गार्ड से कुछ परमिशन ली कि हमें कुछ एक लैब में एक्सपेरिमेंट करने दीजिए. ओके. सो उन्होंने क्या किया, उस वक्त जर्मनी में एक टूथपेस्ट मिलता था जिसमें थोड़ा सा रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता था. वहाँ जर्मनी में एक टूथपेस्ट मिलता था जिसमें रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते थे. किसी तरीके से उन्होंने ये टूथपेस्ट मंगवा लिया और वहाँ पे टिन और इस तरह के मटेरियल से इकट्ठा करके उन्होंने एक्सपेरिमेंट करते रहे. आफ्टर दैट जब उन्होंने प्रिजनर से छुट्टी मिली, यानी जब छोड़े गए, तो इन्होंने रदरफोर्ड के साथ आगे काम किया. रदरफोर्ड के साथ. ओके. एंड वर्क करते गए. तो इनके दो स्टूडेंट थे, बेयर्ड और बल्क ना. उन्होंने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और इनको दिखाया कि देखिए सर ये सही है कि नहीं. तो उन्होंने देखा तो उनको कुछ डाउट लगा इसके अंदर. यानी वो बेरिलियम पे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे. किस पे? बेरिलियम पे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे. तो जब उन्होंने दिखाया तो ही गॉट सरप्राइज एंड उन्होंने सोचा कि इसमें जो फैक्ट कुछ दिक्कतें हैं, तो उन्होंने अपने तरीके से वो एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया. जब एक्सपेरिमेंट किया तो ही फाउंड दैट द बेरिलियम, इट मीन्स बेरिलियम पे जब बेरिलियम पे अल्फा पार्टिकल पास कराते थे तो दे गेट अ वेरी हाई स्पीड, बहुत हाई स्पीड से वो स्ट्राइक होते थे विदाउट एनी डेविएशन. कोई डेविएशन उस रेज में नहीं होता था और वो डायरेक्टली स्ट्राइक करते थे. ओके. सो उन्होंने सोचा कि ये पार्टिकल जो ऐसा है जो किसी फील्ड में डेविएट नहीं हो रहा है. डेविएट मीन्स ना पॉजिटिव की तरफ जा रहा है ना नेगेटिव की तरफ जा रहा है. तो उनके जो स्टूडेंट थे उन्होंने सोचा कि गामा फोटॉन्स हैं. क्या? गामा फोटॉन. तो उन्होंने फर्दर आगे डिस्कवरीज की और ये प्रूव किया कि ये गामा फोटॉन्स नहीं, ये क्या है, एक न्यूट्रल पार्टिकल है जो ना पॉजिटिव फील्ड में डेविएट होता है ना नेगेटिव, हैविंग न्यूट्रल नेचर. सो दैट्स व्हाई ही कॉल्ड न्यूट्रॉन. व्हाट?
कॉल्ड न्यूट्रॉन। और उन्होंने 1932 में एक पेपर पब्लिश किया, उसका नाम था द एग्जिस्टेंस ऑफ न्यूट्रॉन, द एग्जिस्टेंस ऑफ न्यूट्रॉन। और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी के बाद लोग सोचते हैं कि साइंटिस्ट को क्रेडिट जाता है एटॉमिक थ्योरी का, बिल्कुल नहीं, क्योंकि न्यूट्रॉन डिस्कवर किसने किया, यू नो वेरी वेल, जेम्स चैडविक ने। और न्यूट्रॉन से ही बॉम्बरिंग करते हैं, न्यूट्रॉन से ही बॉम्बरिंग की जाती है, तभी कोई भी एलिमेंट क्या होगा, अपने आइसोटोप या आइसोबार्स में चेंज होता है। ओके, तो ये क्रेडिट किसको जाती है, जेम्स चैडविक की। उसके बाद हर लोगों ने, जितने लोगों ने रिसर्च करना शुरू कर दिया न्यूट्रॉन के बारे में। देन आफ्टर दैट न्यूक्लियर बॉम्ब मीन सॉरी एटॉमिक बॉम्ब डिस्कवर्ड हुआ। इज दैट क्लियर? Yes, sir. ओके, तो ये कॉन्सेप्ट था फिलहाल। ओके, सो यहां से हम कंटिन्यू करेंगे आगे नेक्स्ट क्लास में। ओके ओके Yes. Yes, sir. ओके, Okay. नाउ हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। Thank you, sir. स्टे सेफ, Have a nice day, sir. स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, Thank you, sir. मोस्ट वेलकम। ओके, Yes, sir. so how many are there? 16. 16. 16. Two section having 16. 15. 15. Okay, now remove one by one, everyone. Remove itself. Okay, sir. Okay, I hope that this concept is clear to all of you. Any doubt? Yes, sir. Yes, sir. Okay, I will send you the note and then you will read that. If you have any doubt, then ask it. Okay. Okay, sir. Okay.